Hello students. So in today's class we will be discussing about various cell organelles and the nuclear pore complex. Okay. So let's get started. So this the definition of cell we have already discussed, that it is the structural and functional unit of life, and also the difference between prokaryotic and eukaryotic cells we have studied. Okay, so we'll skip these slides. So here you can see the various cellular organelles, okay, so about which we are going to discuss in this class: the mitochondria, ribosomes, lysosomes, cytoskeleton, peroxisome, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, nucleus. Okay, and plasma membrane we have already discussed, and cytoskeleton we'll be discussing in the upcoming classes. Okay, not today. So this is a structure of a typical cell, a detailed structure in which we can see all the organelles, cell organelles, okay, lying in the cytoplasm. So yeah, so what happens, so if we have a cell, okay, so isolation of subcellular organelles, like how cellular organelles, they are isolated from a cell. So how it is isolated? First, the cell is homogenized with the help of a homogenizer, glass homogenizer. Cell को क्या करते हैं? Homogenize करते हैं, okay, by suspending it in isotonic solution. तो होमोजनाइज करना मतलब सेल को एक तरह से डिसइंटीग्रेट कर देना, ओके, टू ब्रेक द सेल, फाइन. एंड देन दिस सेल जो हमारे पास होमोजनाइज करके जो हमारे पास आया है सेल का पूरा मटेरियल, फिर उसे क्या करेंगे? उसे डिफरेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. अलग अलग वेलोसिटी में उसका क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. वील सेंट्रीफ्यूज दैट मटेरियल. और फिर उसके बाद क्या होगा? All the cell organelles, they will separate on the basis of their size. So here, as you can see in this diagram, that we have a homogenate, जो हमने homogenization किया cell का, then we got a homogenate. Okay, so when that homogenate, it is centrifuged 960 G की स्पीड में, when that homogenate is centrifuged for 10 minutes. So कभी भी अगर हम centrifugation करते हैं किसी चीज़ का, तो सेंट्रीफिकेशन के बाद क्या होता है? हमें एक पैलेट मिलता है और एक सुपरनेटेंट मिलता है. पैलेट मतलब एक सॉलिड पैलेट, एक सॉलिड नीचे थोड़ा सॉलिड और पाउडरी मटेरियल गेट्स एक्यूमुलेटेड, और बाकी जो लिक्विड होता है इट कीप्स फ्लोटिंग अप. तो दैट लिक्विड इज नोन एज सुपरनेटेंट, एंड जो नीचे हमारे पास सॉलिड मटेरियल है दैट इज़ द पैलेट. ठीक है, तो सबसे पहले जब अपने होमोजेनेट को हमने सेंट्रीफ्यूज किया 960 जी की स्पीड में फॉर 10 मिनट्स, तो जो पैलेट में आया कौन सा ऑर्गेनेल आया? न्यूक्लियाई. ठीक है, सो न्यूक्लियाई गेट्स आइसोलेटेड इस टाइम पे. देन उसके बाद द सुपरनेटेंट इट इज़ अगेन ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट वायल, एंड देन दिस द सुपरनेटेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, उसे फिर से सेंट्रीफ्यूज किया अगर 25,000 जी की स्पीड में फॉर 10 मिनट. सो अगेन एक पैलेट विल बी फॉर्म्ड, और जो इस बार पैलेट में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड peroxisomes. Okay, now the supernatant obtained after this स्टेप, आफ्टर दिस सेंट्रीफ्यूगेशन, उसे अगर दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया जाए इन 34,000 जी की स्पीड में फॉर 30 मिनट्स, सो नाउ अ पैलेट विल बी ऑब्टेन्ड जिसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स will get settled down in the pellet. Okay, then again the supernatant, when it is centrifuged in more higher speed for a longer period of time, then we get endoplasmic reticulum. So this is how subcellular organelles they are obtained. Fine. So normally a cell, it has three parts. It has plasma membrane. Plasma membrane के अंदर क्या है? There is a lot of cytoplasm and there is nucleus. All the cellular organelles, they are deposited in the cytoplasm. Okay. So very firstly we will be discussing nucleus. So this is a prominent and large cellular organelle, and it house most of cells DNA. Cell का जो DNA है, the main genetic material of the cell, it is present inside the nucleus. We all know. And the nucleus, it is bound by a double membrane. ठीक है, न्यूक्लियर की दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड दीज मेम्ब्रेन्स दे आर ऑल्सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स. इनर मेम्ब्रेन भी एक बाइलेयर है एंड आउटर मेम्ब्रेन भी एक बाइलेयर है, एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ओके,
So it is a spherical or oval shaped nucleus, and most cells, normally cells, they have a single nucleus, although some like mature RBCs, they have no nucleus, and in contrast skeletal muscle cells, they have multiple nuclei. Fine. And the nuclear envelope, membrane of nucleus, it is continuous with the rough ER. We'll be seeing it in the pictures अभी आगे कुछ images में. Okay. And nuclear pores, तो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन दिस मेम्ब्रेन, ओके, विच इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, okay, which are made up of nucleoporins protein. So these nuclear pores, they are required for transport of proteins or RNAs inside and outside the nucleus. Okay, matlab from cytoplasm to nucleus and from nucleus to cytoplasm. Okay, so here we okay, so that picture of nucleus, it was not clear, so we'll see nucleus in this picture. So here you can see that this is the nucleolus portion. Inside nucleus we find nucleolus, but nucleolus, it is not surrounded by a membrane. Okay, it is just a structure localized inside the nucleus, जहाँ क्या होता है nucleolus में ribosomes का production होता है. ribosomes की जो subunits होती हैं, they are synthesized in the nucleolus, but nucleolus, it is not marked by any membrane, इसलिए इसे हम अलग से एक cellular organelle नहीं बोलते हैं. Fine. Chromatin is found inside the nucleus. Here we can see न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हमारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, इन द सिमिलर वे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, एंड हियर द न्यूक्लियर पोर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, द पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, दैट विच आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स. हियर वी कैन सी न्यूक्लियर पोर्स. ओके, नाउ हियर this is the nuclear envelope, the outer nuclear membrane and the inner nuclear membrane. Okay, so here you can see the endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum, it is in continuity with the nuclear आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही कॉन्टिन्यूटी में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेरीप्लाज्मिक स्पेस. व्हाट इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस? द स्पेस बिटवीन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ओके, so yeah, this is the structure of a nucleus. Moving forward. So the next cellular organelle that we'll be discussing are the ribosomes. Okay, so ribosomes, as I already told you, where the ribosomes are synthesized, they are synthesized in the nucleolus. Okay, and they, you all know ribosomes, they are the site of protein synthesis. We have studied the पूरा protein synthesis का process in our previous semester. तो वो कहाँ होता है? It takes place inside the ribosomes. Fine. And you also know that various different types of RNAs are present in the ribosome. एक तो जो हमारा RNA that is being used for protein synthesis, okay, that RNA is present in the ribosome. Also various other RNAs that have various catalytic role, जैसे हमारे 16SR RNA है या जो भी और rRNAs हैं, they are present inside the ribosomes. Okay, so the name of these tiny organelles reflect their high content of rRNA. They have very high content of ribosomal RNAs. So ribosomes, they are of two types. Sorry, the ribosomes, they are either फाउंड या तो ये क्या होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स की, फ्री साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, या ये राइबोसोम्स क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच्ड होते हैं. फाइन. अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच्ड होते हैं तो उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड यू ऑल नो राइबोसोम्स, दे कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, वन लार्ज सब यूनिट एंड वन स्मॉल सब यूनिट. एंड राइबोसोम्स, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स वी हैव 80S ribosomes. And the ribosomes, they are single membrane bound cellular organelles. Okay, they are most of the cellular organelles, they are double membrane bound, but the ribosomes, they are single membrane bound. Okay, now we'll come to endoplasmic reticulum. So it is a network of membranes in the form of flattened sacs or tubules.
फाइन. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन का डेंस नेटवर्क इसमें प्रेजेंट रहता है. एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रफ ER and smooth ER, which we can see in this picture. Like here, this is the rough ER. So what is the difference between rough and smooth? In rough ER, we can see that these are the ribosomes. These circular structure that you are seeing, these are the ribosomes. So when ribosome attaches to the surface of endoplasmic reticulum, it gives the endoplasmic reticulum a rough appearance. That's why it is known as rough endoplasmic reticulum. And the other one, these are smooth endoplasmic reticulum. As no ribosomes are attached, so it has a smooth appearance. उसका जो पूरा cell जो पूरा membrane है, that is smooth in nature. Fine. So here you can see, as I already told you, that the lumen of ribosome, it is lumen of rough endoplasmic reticulum, it is in direct contact with the periplasmic space. Okay. So here again they have shown the label diagram, that same diagram. Okay, so what are the functions of endoplasmic reticulum now? So rough ER, the rough endoplasmic reticulum, they synthesizes proteins. So क्या होता है, जो ribosomes होते हैं which synthesize the protein, ribosome में जैसे जैसे protein synthesize होगा वो क्या करेगा, it enters into the rough endoplasmic रेटिकुलम. ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसमें फिर होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन में, दैट आर परफॉर्म्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And the major post-translation modification that occurs there is the glycosylation. Glycosylation of proteins. Now this is the function of rough endoplasmic reticulum. Now what function does smooth endoplasmic reticulum perform? So the smooth endoplasmic reticulum, it synthesizes phospholipids, cholesterol and steroid hormones. It is involved in the synthesis of phospholipids. You all know phospholipids, they are the major constituent of the plasma membrane. So where the phospholipids are synthesized, they are synthesized in small endoplasmic reticulum. Next is cholesterol, which is for storing energy, and steroid hormones are also synthesized in SER. Okay, SER is also the site of glycogen metabolism. Endoplasmic reticulum stores and releases calcium ions in the cell that trigger the contraction in muscle cells. And in liver and kidney, SER ka there is one more function, that is detoxification. Detoxification is the major function of SER. So it detoxifies drugs and harmful substances. That's why kya hai, liver ka main function is detoxification. So SER is present in a large number in liver cells. Okay. And they also remove the phosphate group from glucose 6-phosphate and release free glucose in blood, which is glycolysis ke usme. Okay. The next is Golgi कॉम्प्लेक्स. तो अगर हम एक प्रोटीन का एक वो देखें, जो हम जितने भी प्रोटीन्स हमारे राइबोसोम्स में सिंथेसाइज हो रहे हैं, द राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू RER, उसमें जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो उसके बाद दैट प्रोटीन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच आई जस्ट टोल्ड यू, एंड सर्टेन पोस्ट ट्रांसलेशन modification occurs in rough endoplasmic reticulum. Then these proteins, they are transferred to Golgi complex. So let's see what is Golgi complex and what happens in Golgi complex, what is its function. Okay, so Golgi complex, it consists of cisternae and these flattened disc, these are the cisternae. Okay, and it consists of 3 to 20 cisternae, and most cells have several Golgi complex. The several Golgi complex, it is not just one in number, cells have several Golgi complex, and Golgi complexes are more extensive in cells that secrete proteins. Cells जिनका function है in secretion of proteins, the number of Golgi complex in it is higher. Okay, and what are the functions of Golgi complex? It modifies, sorts, packages and transport proteins received from the rough ER. rough ER से जो proteins आते हैं Golgi complex में, वो उन्हें क्या करता है, modify करता है. Certain modifications of that protein also occur in Golgi complex. Then it sorts the protein, that which protein is destined to go at which location. उन proteins को sort करता है, packages the protein accordingly,
and then transport all those proteins. Okay. So here in this diagram, you can see the processing and packaging of proteins by the Golgi complex. Okay. So see, students. So here, ribosome. So here, proteins are being synthesized in the ribosomes. These are the synthesized proteins. Ribosomes ये हैं, and from ribosomes it went to the RER, rough endoplasmic reticulum. Okay. Then from rough endoplasmic reticulum, through transport vesicle, the protein it entered into the Golgi complex. Okay. Then from Golgi complex, see, through these transfer vesicle, अब देखो ये जो प्रोटीन है जो वापस जा रहे हैं ना, सो दीज आर द प्रोटीन्स, दीज आर द रेजिडेंट प्रोटीन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. जो प्रोटीन्स किस में रहेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही रहेंगे. दोज प्रोटीन्स दैट आर ट्रांसफर्ड बैक, एंड अदर प्रोटीन्स विच आर डेस्टाइन्ड फॉर अदर लोकेशंस, वो कहाँ, फ्रॉम with the help of transfer vesicle it will move from one cisternae to the next. ठीक है. अब जब ये लास्ट में आया, यहाँ पे क्या है, here you can see these proteins, they are being transported into 3 different kind of vesicles: secretory vesicles, membrane vesicle, and transport vesicle. So here the Golgi complex, it has sorted proteins, that which protein is destined to go at which location. ये कैसे होगा, there are certain signal sequences are present, मतलब जो जैसे a certain protein is destined for membrane. ठीक है, मेम्ब्रेन में जाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन में, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन इज़ डेस्टाइन्ड टू गो देयर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रेजिडेंट प्रोटीन है वो, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक अलग सिग्नल सीक्वेंस होगा, एक अलग सिग्नल पेप्टाइड होगा उस प्रोटीन में. जो लाइजोसोम्स के जो प्रोटीन होंगे उसका जो सिग्नल पेप्टाइड होगा वो एक अलग सीक्वेंस का होगा. सो दैट इज़ हाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट सॉर्ट आउट द प्रोटीन्स. फाइन. So here we can see that the proteins that are in secretory vesicle, they have been secreted out. These proteins are exported from cells to through by exocytosis. Fine. Exocytosis, it is opposite of endocytosis. Then membrane vesicle में जो proteins जाने थे, these proteins, they are being proteins in vesicle membrane merged with plasma membrane. You can see these proteins, they have been merged in plasma membrane. और जो transport vesicle to lysosome, तो अब क्या होगा, these transport vesicle it will fuse with lysosomal membrane, and the proteins present in these transport vesicle, it will be transferred into the lysosomes. Okay, so here these are the entry phase cisterna, these are the medial cisterna, and this is the exit phase cisterna. So this is known as the cis site of Golgi, and this one is known as trans site of Golgi. Okay, so here the Golgi, it is known by many names: Golgi apparatus, Golgi body, or simple Golgi also. So next cellular organelle is mitochondria. So mitochondria, you all know, it is known as the powerhouse of the cell. So mitochondria in appearance, it looks like elongated or rod shaped, and the number of mitochondria also varies depending upon the activity of the cell. ठीक है, like active cells like muscles, liver and kidney, which uses ATP at a high rate, have large number of mitochondria, because what is the major function of mitochondria? For the production of ATP. So here it is we can see a diagrammatic view of mitochondria. Okay, so mitochondria, again, it is bound by 2 membranes. Okay, like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria is also bound by 2 membranes: outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane, and the space inside the inner mitochondrial membrane is known as the matrix. Okay, and the inner mitochondrial membrane, it folds into the matrix to form structures known as cristae. You can see the inner mitochondrial membrane, it has folded into the matrix portion, and the structure it forms is known as cristae. Okay,
So mitochondria, you know, mitochondria contains its own DNA. जैसे हमने पढ़ा है पहले in previous classes that mitochondria and chloroplast, they might have originated, like they might have gone into the cell through endosymbiosis. Endosymbiont theory पढ़ी है हमने that mitochondria और chloroplast जो है originally they might be earlier in evolution they might be present as independent bacteria, और endosymbiosis के through a cell might have ingested it, and फिर क्या है, दे बिकेम द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द सेल, एंड अब हम उन्हें सेल्यूलर ऑर्गेनल्स की तरह पढ़ते हैं. ओके तो इसी वजह से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है उनका क्या होता है, अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है. दे हैव देयर ओन डीएनए प्रेजेंट इनसाइड देम एंड ऑल्सो राइबोसोम्स. फाइन. एंड वेरियस एंजाइम्स, like what are the main functions of mitochondria? First is to generate ATP through reactions of ETC. Electron transport chain occurs inside the mitochondria, और electron transport chain के उससे ही क्या होता है, ATP are being produced. Okay, and the next function is that it helps in biochemical reactions like oxidation of fatty acids and TCA cycle. It also occurs in the mitochondria. So the enzymes for carrying out these functions of mitochondria, they are present in the inner membrane. Okay, here we can see a zoomed view of inner membrane. ये क्या है, one cristae which is being formed by the inner membrane, and we can see the enzymes, they are embedded in the membrane. Okay, so the next cellular organelle is lysosomes. Lysosomes, they are also known as suicidal bags of cell, the common name of lysosomes. Okay, तो lysosome का basically what is the function of lysosome? For degradation of worn out cell का जो अपना भी worn out proteins है या worn out जो भी material है सेल का, for its degradation, या हम अगर कोई बाहर से phagocytosis के through सेल के अंदर कोई outside material आया है तो for its degradation. Okay, so these are membrane enclosed vesicles that form the Golgi complex, form from the Golgi complex. Okay, and there are as many as 60 kinds of powerful digestive and hydrolytic enzymes are present inside the lysosomes, and the pH inside the lysosomes, it is always maintained slightly acidic. तो अगर pH जो lysosome का है, it is always slightly acidic, like pH like approximately at 5. Okay, तो जितने भी lysosomal enzymes हैं, जितने भी ये digestive और hydrolytic enzyme lysosome में present होते हैं, they only function at an acidic pH. Okay. Lysosomal enzymes also help recycle worn out cell structures, and lysosomes, it also serves a function in fertilization, and there are certain diseases which are caused by faulty or absent lysosomal enzymes. They are Niemann-Pick disease and Gaucher's disease. Okay, so moving forward. So the next cellular organelle that we are going to discuss is chloroplast. Okay, so chloroplast, it is a kind of plastid. Plastids, they are cellular organelles which are not present in animal cells. They are present only in plant cells. Fine. So plastids, they are basically of 3 types: chromoplast, leucoplast, and chloroplast. So chromoplast, they are the colored, they contain colored pigments. Okay, so chromoplasts, they are usually present in petals of a flower. Okay, you can observe that petals जो flower की होती हैं, they are very colorful. So that is because of the chromoplast present in them. Fine. Leucoplast का function होता है to store the food. Fine. And chloroplast का function है, chloroplast का जो function है, it is basic function, it is क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट, वेयर द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स. गार्ड सेल्स ऑफ लीव्स में हमारा क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए जो हमारा क्लोरोप्लास्ट लीव्स का अपीयरेंस ग्रीन है, वो किस लिए है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, विच इज ग्रीन इन कलर, विच मेक्स द लीफ ग्रीन इन अपीयरेंस. ओके, सो क्लोरोप्लास्ट अगेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट हैज एन इनर मेम्ब्रेन and has a outer membrane and an intermembrane space, the space between the two membrane, that is the intermembrane space. Fine. So inside the chloroplast, flat disc like structure are present. Here you can see flat disc, ये जो आप pancake जैसे देख रहे हो ना बहुत सारे. So this one single pancake, one single disc, it is known as thylakoid.
and these thylakoids, they are stacked one upon one above another, and it forms a structure which is known as granum. Fine. And the chlorophyll pigments, they are present in the membrane of these thylakoids. Chlorophyll is present in these thylakoid membranes. Fine. And this स्ट्रोमा, जैसे हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सिमिलरली the fluid portion that is present inside the chloroplast, it is known as stroma. And one other, stroma lamellae, these are the structures which join the different granum with each other. And in the stroma, what is present, like mitochondria have their own DNA, similar way chloroplasts, they also have their own DNA. Okay, so DNA and ribosomes are present in this stroma. Okay, and what are the functions of chloroplast? So the main function of chloroplast is performing the photosynthesis. जो photosynthesis process होता है plants में, that is performed in the chloroplast, which is required for the synthesis of food in plants. Okay, and these chloroplasts, they absorb light energy and it converts it into chemical energy in the process of photosynthesis, and they produces NADPH and molecular oxygen by photolysis of water, and it also produces ATP, adenosine triphosphate, again by the process of photosynthesis in plant cells. Okay, so that's it about the cellular organelles of the cells. अब एक और चीज़ जो हम अभी डिस्कस करेंगे, that is the nuclear pore complex. Okay, what is the nuclear pore complex? Let's see. Okay, so as I already told you, nuclear pores, certain pores are present in the nuclear membrane. So these pores, they are known as nuclear pores, and many proteins are arranged in these nuclear pores for maintaining its structure and for maintaining the trafficking of proteins inside and outside of the nucleus. So the whole proteins that are present in the nuclear pores, that is known as nuclear pore complex. Okay, so the basic trafficking that occurs through the nuclear pores is, we all know that transcription occurs inside the nucleus. Okay, और translation कहाँ होता है? Cytoplasm में. ठीक है, so for translation to occur, the RNA that is formed in the transcription process inside the nucleus, that has to be exported into the cytoplasm. So it occurs through the nuclear pores. Okay, similarly हमारे जो जितने साइटोप्लाज्म के जितने प्रोटीन्स होते हैं, अगर जो न्यूक्लियस के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दैट प्रोटीन्स हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस. लाइक द बेसिक वन इज जैसे हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, या वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड इन द nucleus, but they are being synthesized in the cytoplasm. So transfer of those transcription factors inside the nucleus, that also takes place through the nuclear pore complex. Okay, so let us understand the nuclear pore complex with the help of this diagram. So here we can see this is the outer nuclear membrane, and here this is the inner nuclear membrane, and this is the periplasmic space. Okay, so this is one. Wait. Okay students, sorry I had to pause it in middle. मेरा कुछ एक कॉल आ गया था. So let us start from where we left. So yeah, let's zoom this diagram a little, and now we can see the outer nuclear membrane, inner nuclear membrane, and the periplasmic space present between the nuclear membrane. Okay, and this green color, it is the nuclear lamina. These are the cytoskeletal filaments that are present in this nuclear lamina, which उसका क्या function क्या है nuclear lamina का? To give a shape, to provide shape to the nuclear membrane. न्यूक्लियस का पूरा एक जो शेप है, जैसे साइटोस्केलेटन होता है, सेल का स्केलेटन होता है, उसका क्या फंक्शन है? टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. सिमिलरली न्यूक्लियर लेमिना में जो फिलामेंट्स हैं, इसका इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, सो नाउ सी, दिस इज वन nuclear pore.
ओके, सो दिस न्यूक्लियर पोर, इसका एक कट सेक्शन यहाँ पे दिखाया है. हेयर दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर, जिसमें वी कैन सी वेरियस प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियर पोर. वेरियस प्रोटीन्स जिसकी असेंबली से न्यूक्लियर पोर इज बीइंग फॉर्म्ड. ओके, and all these proteins, they are known as nucleoporins. Okay, so there are many kinds of protein, like almost 60 different kind of proteins are present in the nuclear pore. Okay, so here we'll discuss a few of them. So the one is luminal subunit, which is this pink color subunit you can see here, and the annular subunit, the green color subunit you can see here. Okay, so the luminal subunit ये आप देख रहे हैं क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में एम्बेडेड है, एंड दिस इज द एन्यूलर सबयूनिट. फाइन. सो दिस luminal subunit and annular subunit, इनका क्या फंक्शन होता है, टू रिमूव द फ्रिक्शन. जैसे व्हेन प्रोटीन्स एंटर्स और एग्जिट्स the exits through the spore complex, तो उस समय the friction that is produced, to remove that friction, these annular subunit and luminal subunits perform their function in removal of that friction. Fine. Now other subunits, here we can see the column subunit. This is the column subunit and the ring subunit. Column subunit, and it is not marked here, I guess. Yeah, this is the ring subunit. This dark orange color thing is the ring subunit. Now this column subunit and ring subunit, they are symmetrically arranged, like 8 such subunits are symmetrically arranged to form the nuclear pore complex. Okay, फंक्शन क्या है कॉलम सब यूनिट और दिस रिंग सब यूनिट का, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस nuclear pore complex. Now you can see the nuclear fibrils, they are हर एक कॉलम, हर एक रिंग सब यूनिट से वन न्यूक्लियर फिब्रिल जो है इज बीइंग एक्सपोज टूवर्ड्स द, ये जो है ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर साइड है. ठीक है, एक न्यूक्लियर फिब्रिल जो है इज बीइंग एक्सपोज फ्रॉम ईच रिंग सब यूनिट, और ये नीचे क्या है, एक न्यूक्लियर बास्केट में इट इज बीइंग कनेक्टेड, अगेन टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर पोर complex. Okay, so that's it about the nuclear pore complex, students. Yeah, the ring subunit, देखो यहाँ पे ring subunit is marked here. Okay, so that's it about the nuclear pore complex. So next we have the functions of nuclear pore complex, which we have already discussed. Fine. So yeah, that's it. Okay students, thank you. That's it for today's class.